Welcome back once again from National Bank Stadium here in Karachi, where the Pakistan Women's Under-19 team are taking on the South Africans Women Under-19 team in the first of the 5 T20 international series. The umpire says we're all set, and we're all set for the first ball of the second innings, with South African Women Under-19 team requiring 104 to win this one. Starts off with a wide-ish delivery, and first runs on the board already, courtesy of an extra run. Guided that one past backward point. Some work to do for the third man. She's not going to cut that one off. A boundary to open the account there for Mari, and a good start once again from South Africa. Well, very good start. It was a good ball. Not that it was not a bad ball. It was within the stumps, but she played it very well. This is the shot we should play, and now the pitch will get better. It's good. It will become better for the batting because the ball is not going to hold. Too short and wide, and she gets it in the gap. No chance for the fielder at mid-off. She gets another boundary, and a good one. That's commentator's curse. But she bowled a little bit of short of length. Down the pitch and gets it past mid-on. This will run away for 4. There is nothing much the captain Fizza could have done about that. We didn't see Pakistani batters using their feet, but Venter is already doing it in the power play. She used her, came out of the crease, used her foot, and reached to the length of the ball. Once again, a beautiful cover drive. Excellent shot for 4. Yeah, really good batting this now from Venter. She's oozing in confidence. In the previous delivery, she was able to come down the pitch, so she realized that the batter, in fact the bowler, will be trying to bowl slightly shorter, which she did, and she was ready for it. तो फिर आपको विकेट्स लेने की ज़रूरत होती है, और वो भी तसलसल के साथ. That one is belted into the leg side. No one could stop that one, as that one travelled away to the boundary for 4. जी हाँ, बड़े खूबसूरती के साथ बैकफुट पर जाकर इस गेंद को बैश कर दिया मिडल ऑफ द बैट, और ये आप देख सकते हैं क्विकली जो है वो गेंद एक टप्पा खाने के बाद बाउंड्री लाइन पार कर गई. She goes again. 4 more. शानदार बैटिंग, बड़ा अच्छा अंदाज पावर प्ले को मुकम्मल करने का मैरी की जानिब से. बैक टू बैक बाउंड्रीज, और साउथ अफ्रीकन गर्ल्स वेरी मच ऑन द वे टू विन दिस फर्स्ट T20 मैच. 6 overs have been bowled, 46 for none. कि अब महज जो है वो रन्स रह गए 57 इस मैच में फतह हासिल करने के लिए. ओ, थ्रो बराह रास्त विकेटों में लगी है. ये लेडी अंपायर आपकी स्क्रीन पर, शी गोना रेफर इट, आई रेकन. यस, शी हैज रेफर्ड इट टू द टेलीविजन अंपायर. आई रेकन batter is in trouble. I can tell you that. Batter is in trouble. Yes, it is. And that's what you can see on the giant screen. तो पाकिस्तान को पहली विकेट मिल गई, और रन आउट के ज़रिए, जो कि काफ़ी मैं समझता हूँ कि मुतहर्रिक करेगी पाकिस्तान की फील्डर्स को. रन रेट अभी भी बहुत अच्छा है, और ये इनकी साथी खिलाड़ी जो अपनी साथी बैटर्स को दाद देती, चूँकि अब हाफ सेंचुरी या निस्फ सेंचुरी मुकम्मल हो गई है साउथ अफ्रीका अंडर-19 की. Oh, that one wrapped over the pad, and yes, as we were discussing, 1 bring 2, run out, and then the LBW. Maham got a wicket, और 50 रन्स पर साउथ अफ्रीका की 2 बल्लेबाज अब आउट हो चुकी हैं. ये आप देख सकते हैं रीप्ले में, माहम की ये खूबसूरत गेंद साइड ऑन एंगल से, कोई प्रॉब्लम नहीं है. फ्रंट फुट वेल विद इन द पॉपिंग क्रीज है, और ये आप देख सकते हैं इस तरह ये प्लम इन फ्रंट ऑफ द स्टंप्स, और बिल्कुल बैट और गेंद जो है उनकी कोई मुलाकात नहीं थी, जिसकी वजह से ये लेग बिफोर विकेट हुई. हाइट का ताल्लुक है. अगर एक मैन जो है 5 फीट 6 इंच का मिसाल के तौर पे, तो एक गर्ल जो है वो 4 फुट 8-9 इंच की हो सकती है, तो उसकी टांगों की ऊंचाई जो है वो कम हो सकती है. Oh, there you go, there you go. What is going on? ये देखें, क्रिकेट का खेल अपने रंग दिखाता हुआ. इसीलिए हम कहते हैं इट इज़ द गेम ऑफ ग्लोरियस अनसर्टेनिटीज. 1, 2, 3 विकेट्स गिर गई हैं, और इससे अनफॉर्चुनेट वे नहीं हो सकता कि शी स्ट्रक इट हार्ड, मगर नॉन स्ट्राइकिंग एंड पे रन आउट हो गई.
जी हाँ, थोड़ी सी फिंगर टिप लगी और गेंद जो है वो स्टंप से टकराई। वन ऑफ द मोस्ट अनलकीएस्ट वे जो है आप कह सकते हैं एक बैटर का रन आउट होने का। ये आप देख सकते हैं रीप्ले में, ये पाँव से टकराई थी बॉल उनके और उसके बाद विकेटों से जाके हिट किया। एट टाइम्स अनइंटेंशनली चीज़ें जो हैं वो आपके फेवर में चली जाती हैं, तो कुछ ऐसा ही इंसिडेंट्स जो है वो देखने को मिला। कदमों का इस्तेमाल किया, लॉन्ग ऑन पे मौजूद थे फील्डर, मगर उनके लिए कोई मौका नहीं, गेंद बाउंड्री से बाहर, छक्का। Down the wicket she comes and she has given that a go, and that one is landed outside the boundary for a massive 6. Again a counter attack from the South African girls. जी हाँ, ये ऑलमोस्ट एक रिपीट ऑफ दैट शॉट है जो हमने पहली इनिंग्स में, पाकिस्तान की इनिंग्स में शहरबानों के बल्ले से देखी थी। मिड ऑन के ऊपर से उसी अंदाज में Nicely driven and taken. That's a brilliant catch. How many times have we seen that right after the drinks break, a wicket falls? Excellent catch. It was hit very hard, really hard. The line was very good towards the off stump, and it's a perfect ball outside her hand. She drove it very hard, but straight to the fielder. Excellent catch by the fielder, and they have lost another wicket. 78 for 4. Driven. Bit of a misfield. The mid-off in pursuit, but I don't think she's going to win the race. The captain gives up a boundary for Mia. The ball by Zeeb was an excellent over. She was a bit unlucky. Very well driven, but it was through the hands. It's not going to serve the purpose for the Pakistan team. Anyway, 86 for 4. She goes for a big one. Now there is a fielder out there, but it's going to go over her head. It was a risky stroke, or there was a fielder positioned perfectly for that shot at square leg, but that ball just kept going over her head. Excellent shot. Very well timed. Going towards the fielder, but it was over the head. Excellent shot. The ball was pitched towards the leg side. As I said earlier, the length is not good. And she was standing outside the crease. That's the amazing thing. Full toss in the air. Opportunity and gone. The captain doesn't make a mistake there at mid-off. A full toss brings another wicket for Pakistan as Mia Lenore, who was looking very dangerous, now departs. I think they need another couple of more wickets if it's possible. So went for a big try, but straight to the fielder, and she took a good catch, the captain. So another wicket gone, 5 gone for 94. Lovely delivery. That's a dream delivery for a left-arm spinner. A bit of drift and the ball just turning away from the right-hander. I totally agree with you. It's a dream ball for a left-arm spinner. Excellent bowling by this young, I will say she must be 16 or 17-year-old, but excellent line, excellent length, good turn, beautiful delivery. That's the only thing missing from the captaincy right now. That was pitched up and outside the off stump. He has already let that go, and that's going to touch the boundary ropes. Could have been stopped. A dive could have been useful there for Pakistan, but unfortunately it's going to be a boundary, and 100 comes up for the visitors. So all in all, it has been a very comprehensive performance by South African girls. बैकफुट पर जाकर खूबसूरती के साथ खेली, यहाँ पे फंबल की बदौलत एक रन जो दरकार था वो हासिल कर लिया डेनिली ने, और दे गेट ओवर द लाइन. साउथ अफ्रीकन बड़ी उम्दगी के साथ पहले मैच में फातेह करार, और बड़ी थंपिंग परफॉर्मेंस, थंपिंग विक्ट्री मैं कह सकता हूँ यहाँ पे साउथ अफ्रीकन गर्ल्स की जानिब से.
मैच समरी आपकी स्क्रीन पर. पाकिस्तान अंडर 19 गॉट 103 in their allotted for the loss of 6 wickets in their allotted 20 overs, जिसमें अक्सा के 38 रन थे, जोफी शाह के 30 रन थे और शहर के या शहर बानो इनफैक्ट कहना चाहिए उनके 18 रन से 3 विकेट्स के साथ. वेन वाइक जो है वो टॉप विकेट टेकर थी. मियाँ ने 2 खिलाड़ी आउट किए और मलीसा टोक अ विकेट.